today about food and how important it is in the well-being of our children. Usually, we feel we are giving our children the best quality of food. We are giving a lot of variety, but we are also guilty of indulging into a lot of different passions and temptations of our children. As a parent, you have to be mindful of setting a good food routine for your kids. For parenting tips, celebrity interviews, recipes, conversations with experts, and lots more, subscribe to Ruchira Darda now. The foods that are essential for their well-being are raw salads, fruits, juices, coconut water, soups, maybe some hydration liquids like nimbu pani, panna, kokum sharbat. These are the foods that actually stimulate well-being, immunity, and actual energy in our children. But as parents, बहुत बार हमें लगता है कि रोटी चावल ज़्यादा खाने से बच्चे ज़्यादा healthy होंगे. And we force our kids to eat a certain amount of falkas, a certain quantity of rice, but that actually is detrimental. So what will help our children to sort of stay in their best health but at the same time have balanced meals? Plan your meals. A breakfast should be made of simple fruits, juices, dry fruits. If your child is at home and they're very young, maybe you can include a hot breakfast for a little later. But after they go to school and they've had their tiffin, they've had the meal in school, when they come home, receive them again with a bowl of salad. Receive them with a glass of juice. So they've come tired. It's been a long day. जब बच्चा थक के घर आता है और हम उसको एकदम से हैवी मील दे देते हैं, कुछ एकदम पका हुआ खाना खिलाते हैं जैसे कि उपमा, पोहा, टिक्की या कटलेट, तो ऑलरेडी वो थके हुए बच्चे की बॉडी को और उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है. तो उस टाइम पहले उसे एनर्जी वाले फूड्स दीजिए, जैसे एक ग्लास ऑफ जूस उसे थोड़ा स्टिम्युलेट करेंगे, उसमें फिर थोड़ा सैलेड ऐड करिए जिससे उसकी शरीर को फ्रेश एनर्जी मिलेगी. नेचुरल फ्रूट्स हमको एक्चुअली लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी भी देते हैं. इसके बाद आप गरम नाश्ता उसमें ऐड करिए सो दैट the child has had some amount of stimulation, hydration, and now there is also something that is carb intensive to create further energy for the day. In the night, as a rule, thumb rule, we always start our dinners with a bowl of soup. It is very important to add this element to your meals because a lot of vegetables go into the child's body. वेजिटेबल्स गिव अस फाइबर. डाइजेशन के लिए खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हमको बहुत सपोर्ट मिलता है. सो जितना आप उसको सूप पिला सकते हैं, जितना ऐसी हेल्दी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, उससे बच्चे का इम्यूनिटी, डाइजेशन सब कुछ अच्छा रहेगा. नाउ लॉट ऑफ टाइम्स आई सी पेरेंट्स मेकिंग वेरी बेसिक एंड फंडामेंटल मिस्टेक्स, जिसे हम खाने को टेस्टी बनाने की बहुत कोशिश करते हैं. टेस्टी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें, बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें यूज़ करते हैं. बट ये चीज़ों से हमारे बच्चों की इम्यूनिटी डिप्लीट होती है, डाइजेशन में डिफ़िकल्टी होती है. सो स्टार्टिंग से ही एक्चुअली जब एक बच्चा छोटा होता है ना, तब उसे ये सब फ्लेवर्स की नॉलेज नहीं होती है. जब उसको ये डिमांड्स नहीं होती हैं कि ऑयली चाहिए, स्पाइसी चाहिए, बहुत मीठा चाहिए, ये आदतें हम डालते हैं हमारे बच्चों में क्योंकि हमें वो आदत है. We were not taught maybe at that time. Our parents didn't have that exposure to say, hey, these are the good things to eat. We got carried away with lot of influence of packaged food, of variety of food available in the market. I am not saying don't enjoy it. Enjoy everything. खाना चाहिए. We all, my personal favorite is a packet of chips for sure. But एक balance create होना चाहिए. In your routine day, at home, can you create a little balance for your children? And that balance comes in also the way you cook the food. आप उस खाने में क्या डालते हैं, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है. अगर बच्चे ने
टाइम टू टाइम प्रॉपर खाना खाया है एंड एक प्रॉपर मील उसको मिला है, उसको हर एक चीज़ कवर हुई है, फ्रॉम फ्रूट्स, सैलड्स, ड्राई फ्रूट्स टू गुड न्यूट्रिशियस इंडियन मील, then they will also not have the cravings to binge eat on different junk food items like chips, biscuits, these little knick-knack things जो बच्चे बीच बीच में खाते हैं। वो आदत सबसे बुरी है। एक तो उससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कॉन्स्टेंटली चलता रहता है, प्लस ये चीज़ों से हमारे बच्चों की हेल्थ एक्चुअली डिस्ट्रॉय होती है। उस पर थोड़ा स्टडी करिए, उसको थोड़ा समझिए। अगर आपकी इच्छा भी है कि आज कुछ पार्टी है, हम कुछ फैंसी फूड बना रहे हैं, हम कुछ हैवी फूड बनाने वाले हैं, तो उसको सप्लीमेंट करिए हेल्दी न्यूट्रिशियस मील प्रीवियस मील से। जैसे कि आज हमारे अगर बच्चे घर में पार्टी है तो मैं मेरे बच्चों को एक बिग बोल ऑफ पपीता खिलाऊंगी बिफोर डिनर टाइम, क्योंकि उसके जो न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ है उससे वो खाना डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करेंगे। ऐसे ही कोकोनट वाटर यूज़ करते हैं, ऐसे ही आप अच्छे फ्रेश सैलड्स यूज़ करिए एज अ सप्लीमेंट टू द डैमेज दैट्स गोइंग टू हैपन। Setting food routine, setting mindful eating habits is actually a lifestyle. It is not a luxury. It is not a choice. Don't give yourself and your children a choice on this matter. Be firm. Because एक healthy, happy बच्चा अपनी लाइफ को अपनी कंट्रोल में ले सकता है। He can be independent and actually execute his day on his own. बट अगर बच्चा क्रैंकी है, अनहैप्पी है, अनहेल्दी है, तो वो हमेशा आपके ऊपर क्लिंगी रहेगा, आप पे डिपेंडेंट रहेगा। वो अपनी लाइफ अपने हाथ में, अपने कंट्रोल में नहीं ले पाएगा। So if you want to raise independent, healthy children who are functioning at optimum capacity, बहुत बार you will hear children complaining of difficulty in focusing, in concentration, in studies. It is a lot to do with the food. The foods we eat actually determine how we feel during the day. So set a good routine. This is the routine I suggest. Start the day with a glass of coconut water, some fruits and dry fruits. It's a nice filling meal. Then obviously the kids will eat their tiffin in school. They'll have a meal in school. Once the kids are back home, give a glass of juice, a little salad, and then a hot meal of your choice. Later in the evening, maybe give them again a fruit to sort of start their dinner time. Maybe it could be something light like a papaya, and then a bowl of soup and a nutritious Indian meal. So that means dal, sabzi, roti, or dal, sabzi, chawal. Try to not mix the grains. You can again enhance the quality of food by skipping a wheat roti and moving to a millet roti like nachni, bajri, jwari. These are much more nutritious, much better. They add a lot of iron, calcium, protein to our meals, which our children need for growing in a healthy way. Don't overfeed your kids. Do not fix the amount, the quantity of food that the children have to eat. Instead, focus on the quality of food that the kids are eating. Let the children eat according to their capacity and their taste. And the biggest thing that you need to do is make yourself a mindful eater. Children are going to do what they're going to see. So as a parent, instead of preaching your child to eat the right foods, you eat right. Once they see you enjoying a good healthy meal, they will always choose a good healthy meal because you're the only influence that matters. I'm Ruchira Darja. Follow my handle for more such parenting tips and tricks to make your journey as a parent a joyful one and a mindful one. See you in the next video.